Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to have fourth lesson that is about poem Daffodils. Poem Daffodils has been composed by poet William Wordsworth. William Wordsworth was born in 1770 and died 1850. First we will learn something about the poet. William Wordsworth was born at Cockermouth in Cumberland on April 7, 1770. His passion for nature is well known, that is why he is referred to as the poet of nature. Wordsworth is a true worshipper and ardent lover of nature. It was a creed for him. According to him, nature is a teacher and preacher. In this poem, the poet has presented before us the healthy and purifying and enduring impact of nature on human beings. Student, poem consists of four stanzas and each stanza consists of 6 lines. और जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं काफिया और रदीफ, तो इसमें काफिया का भी ख्याल रखा गया और उसके मुताबिक इसको कंपोज किया गया है. फर्स्ट वी विल रीड फॉर यू द स्टेंजास एंड define it. First one is, I wandered lonely as a cloud that floats on high or vales and hills, and all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So in this stanza, the poet says that one day he was wandering aimlessly when he saw a crowd of daffodils. Those daffodils were growing on the bank of a lake, and they were dancing and fluttering their head in the breeze. Breeze means cool morning air. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Students, daffodils are flowers which are grown on water and mud. These are ordinary flowers, but the way the William Wordsworth has composed it, it has made them immortal. ये आम किस्म के फूल होते हैं जो पानी के किनारे उगते हैं और पानी के अंदर भी उगते हैं, लेकिन जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस नज़म को लिखा है, इससे इनको एक लाफानी जो किरदार की हैसियत हासिल हो गई है. इन सेकंड स्टेंजा द पोएट से, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन and twinkle on the Milky Way. The poet has compared them, the flowers, to the stars in the Milky Way. Stars are unnumbered and immense and cannot be counted, so he saw the flowers, they were in a big number. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. Margin of a bay means bank of the lake, edge of the lake. 10,000 saw I at a glance. The poet says that they were in abundance and he saw more than 10,000 in one sight. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. फ्रेंड, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि बड़ा मस्त किस्म का रक्स कर रहे थे, वो मदहोशी की हालत में जो है वो वहाँ पर उसका रक्स हो रहा था और बहुत चुलबुले और वो रंगीन नज़र आ रहे थे. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. In such a jocund company, I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The poet says that they were dancing there, and the waves of the lake were also dancing there. And he has compared the dance of the flowers with the uh, dance of waves. The poet says that the waves were dancing in a very beautiful way, but the dance of the flowers make them out. A poet could not be gay in such a jocund company. Jocund company, happy company. तो कहते हैं कि शायर जो है इस तरह की एक माहौल में, इस कंपनी में खुश हुए बगैर कैसे रह सकता है. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट. गेज्ड, लुक केयरफुली, घूर के देखना, तवज्जो से देखना. मैं देखता ही रह गया, बहुत कम सोचा. वॉट वेल द शो टू मी एट ब्रॉड, कि वो नज़ारा जो उसके लिए कितनी खुशियाँ लेकर आया था. लॉट ऑफ हैप्पीनेस ही गॉट देयर. एंड द लास्ट स्टैंजा इज, फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. And late after, the poet, whenever remembers that, when he lies on his couch, when he is in a pensive mood, in a free mood,
They flash upon that inward eye. Inward eye means his imagination. Those flowers come to in his memory and his imagination, which is the bliss of solitude. Solitude means tanhai. तो वो समझता है उसकी तन्हाई में जो है उसके एक नेमत की तरह एक ब्लेसिंग की तरह उसके सामने आ जाते हैं. एंड देन माई हर्ट विद प्लेजर फिल्स, और उसका दिल खुशियों से भर जाता है. एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और समझता है कि फूलों के साथ साथ वो भी रक्स कर रहा है. फ्रंट पोइम की रीडिंग हमने कर लिया. नाउ विल डिस्कस द एक्सरसाइज दैट इज ऑन पेज 54. Some figure of speech have been given there and we'll discuss about that. First one is simile. A simile is a figure of speech which like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar. Friend, two ideas are compared but they are dissimilar, they are unlike. इसका उर्दू में हम इसको तशबीह कहते हैं, जिसमें दो चीज़ों के दरमियान मुवाजना किया जाता है खूबी और खामी की बिना पर. यही चीज़ यहाँ पर भी है. तो सिमिली किसके बराबर होगी? तशबीह के बराबर. यानी दो जो आपस में मुतज़ाद हक़ाइक़ हैं या ख़यालात हैं उनको आपस में मुवाजना किया जाता है, और उनके लिए जो कंपेयरिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो लाइक और एज होते हैं. नेक्स्ट वन इज मेटाफर. इफ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट omit the word like, then we are using a metaphor. इस तरह के उर्दू में हमने कहा है कि जब हम दो चीज़ों के दरमियान मुवाजना करते हैं और तशबीह के अल्फाज हरफ तशबीह इस्तेमाल करते हैं तो वो तशबीह होता है. बट इफ़ वी omit द वर्ड लाइक एंड एज, दैट इज़ चेंज इनटू मेटाफर. और जिस तरह हम कहते हैं कि अगर उसमें से तशबीह और हरफ तशबीह निकाल दिए जाएँ तो वो लफ्ज़ जो होता है वो इस्तारा बन जाता है. तो यही जो है मेटाफर को हम उर्दू में इस्तारा कहते हैं. जैसे हम कहते हैं ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फ्लाइट, यानी उसने जंग में अपने आप को शेर साबित हुआ. अगर हम कहते हैं ही प्रूव्ड एज अ लाइन तो या लाइक अ लाइन, तो फिर जो क्या होता है, इट वाज अ मेटाफर. Personification, it's a figurative language technique which where an object or idea is given human characteristics or qualities. किसी बेजान चीज़ को या किसी बेजान चीज़ के एक्शन को जानदार चीज़ के साथ तशबीह देना, उसके किरदार के साथ, उसकी जबिलत के साथ कंपेयर करना, ये पर्सनिफिकेशन कहलाता है. तजसीम कहते हैं, यानी इसको मुजस्सम शक्ल कर देना. The candle flame danced in the dark. Dancing is the quality of human beings and animals and birds, but it has been given to the candlelight. The sunflower nodded in the wind. Nod means to say something by moving head. Yes, to say yes by moving head. So it is the quality of human beings, but this has been compared given to the sunflower. So this is personification. Next one is imagery. Imagery is the construction of details used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as the senses of by five senses given to us by Allah Almighty. And your five senses that have been given bestowed to us. By those senses, if something is detected and that is created in the mind of the reader by the poet, that is imagery. यानी मंजर कशी करना, किसी मंजर को इस तरह लिखना कि पढ़ने वाले के जहन में उसकी एक तस्वीर बन जाए, मंजर बन जाए, इसको हम इमेजरी या कहते हैं, मंजर कशी कहते हैं. इसकी 5 किस्में हैं. विजुअल यानी बसारत से देखने से, ऑडिटरी सुनना से, समाज से, स्मेल सूंघना से, टेस्ट चखने से और टच छूने से. ये 5 हैं जो उसमें हम यूज़ करते हैं. फ्रेंड, इसके बाद जो स्टेंजा हैं और इनकी पैराफ्रेजिंग जो है और उनकी क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको दिए गए हैं. वो आपने अपनी आपके नोट्स में भी आपके पास मौजूद हैं. यू हैव आल्सो बी गिवन ऑन द स्क्रीन. आल्सो स्क्रीन के ऊपर भी आप उनको देख सकते हैं. इसके बाद आंसर क्वेश्चन हैं वो भी आपके इसके साथ दिए गए हैं, वो भी आपने यहीं से करने हैं. और फ्रेंड इसके बाद पेज नंबर 170 फॉर ग्रामर एंड कंपोजिशन. There is exercise. You have to change the first 10 sentences into passive voice. Exercise consists of 20 sentences, but you have to attempt first 10 uh, sentences and change them into passive voice. That your home task. And with this, the lecture is over. I think you will be benefited by this. Allah Hafiz.